Before My sweet Lord, my Lord, my sweet Lord, I really want to see you, really want to be with you, really want to see you, Lord, but it takes so long, my Lord, my Lord, my sweet Lord, my sweet Lord, really want to know you, really want to go with you, really want to show you, Lord, that it won't take long, my sweet Lord, my Lord, my sweet Lord. तो ये जॉर्ज हैरिसन आज तमे प्रभुपाद लीलामृत पढ़ा जॉर्ज हैरिसन जेतळु माने इस्कॉन रे कनेक्ट हे जाइछंती तो तापर सी ए जो एल्बम टा बनेथिले माय स्वीट लॉर्ड सेटा बहुत फेमस हेथिला एवं से एल्बम रा कॉपीज समस्त को से टाइम रा वर्ल्ड वाइड एटा बहुत ब्लॉकबस्टर थिला आ समस्त को जे भी माने एल्बम टा सुनी छन से जानि परिबे जे माने कृष्ण कॉन्शियसनेस मूवमेंट कोटे अछि किछि आ से समय रे अमेरिका रे थिला यूरोप रे जो स्टार्ट होथि आ ऑल ओवर वर्ल्ड नथि तो ये एल्बम टा आ जॉर्ज हैरिसन जोगु सारा विश्व रे हरे कृष्ण मूवमेंट स्प्रेड हो गला और फास्ट मन तार इफेक्ट बहुत फास्ट है तो आमे ए पार्ट टा पढथिले चैप्टर 2 इस्कॉन स्थापन हे जाइथिला से वीडियो टा देखली जोठी इस्कॉन स्थापन हला से कौन सब कथा हेले तापर इस्कॉन रे जो समय सब जोटा फर्स्ट इस्कॉन हमर लैंड थिला सेठी केमती से माने अरेंजमेंट करिवे प्रभुपाद को पई बहुत सुंदर भाबरे खंजी देबे से रूट टा को 22nd एवेन्यू मैथलेस गिफ्ट जो स्टोर फ्रंट टा सेटा बहुत सुंदर भाबरे खंजीवे ताकि प्रभुपाद जेतळे आसीबे देखिबे बहुत सुंदर अरेंजमेंट ही छी तापर से माने बहुत सुंदर भाबरे पेंटिंग्स लगेबे कोठी हनुमान कोठी राधा कृष्ण कर राउंड रे पिक्चर कोठी लगेले षडभुज गौरांग तो ये विभिन्न फोटोग्राफ्स लगेले से माने इंडिया रो किनी ऑल द सन जान नथले हनुमान किए षडभुज गौरांग किए राधा कृष्ण किए बट सन भाबले इंडियन हिची तो कि स्पिरिचुअल हेती तो भाबी कि माने लगेले कृष्ण प्रभु हरे कृष्ण माता जी ओके तो तापर हम एटू पढिबा The summer of 1966 moved into August and Prabhupada kept good health. For him, these were happy days. New Yorkers complained of the summer heat waves, but this caused no inconvenience to one accustomed to the 100-degree plus temperatures of Vrindavan blazing summers. It's like India. 5 degree Fahrenheit, right? So it's just like India. He said, as he went without a shirt, seeming relaxed and at home. तो से समय जो गर्मी रो समय प्रभुपाद भी केवल उत्तरी पकेगी पढ़ाते. He said that in America he would have to subsist on boiled potatoes, otherwise there would be nothing but meat. अमेरिका रे सब समय कौन था समस्त मीट खाती हॉट डॉग ये से. So Prabhupada had to sustain on boiled potatoes, but here
he was eating happily same rice, dal and chapatis. मैं जेतोल प्रभुपाद नुआ नुआ आस्थिले तापर जेतोल प्रभुपाद कर किछि devotees connect हे गले तो प्रभुपाद would cook for them गोटे बे रिसेंट गोटे लेक्चर मु सुनथिली प्रभुपाद कहउतले भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आविर्भाव दिन थिला यदि भक्ति विनोद ठाकुर को आविर्भाव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को आविर्भाव दिन थिला एवं से दिन प्रभुपाद निजे कुकिंग कले आ 70 जनकर feast with 12 items प्रभुपाद तैयारी कले 1.5 घंटा तमाल कृष्ण महाराज कहउतले एटा ताको मेमोरी माने प्रभुपाद केते एक्सपर्ट तो प्रभुपाद केवल जे माने डिवोटीज मानकू अलगा माने इंस्ट्रक्शन देछन नो प्रभुपाद आल्सो has shown by example in every respect so प्रभुपाद कहउछन मते आगुसना केवल boiled potatoes रे रहयो थिला now I have rice dal chapatis everything cooking on same 3 stack cooker in India प्रभुपाद कुकर रखले प्रभुपाद ऊपर राइस रखती सब्जी ता तळे डाल तो सुंदर भाव जो रखिबे तो गोटे थरे तीनटा खाइले work on the Srimad Bhagavatam also has gone on regularly since he had moved into the Second Avenue apartment and now Krishna was bringing the sincere young men who were cooking, typing, hearing him regularly, chanting Hare Krishna and asking for more. से जो एपिसोड टा मु पठेतिली सेटा देखिबे जे प्रभुपाद को पाखु आछंती हयग्रीव प्रभु जने नुआ अमेरिकन शिष्य एवं से जेतोळ आछंती तो संगे संगे से प्रभुपाद पूछन प्रभुपाद मो पई कि सेबाज प्रभुपाद कहली इफ यू कैन ट्रांसलेट these books or these you can edit this text and type them then it will be a great help तो से टाइप करिया से दि तीनटा पेज एवला प्रभुपाद देले से भलो कले तर प्रभुपाद आ 8-10 टा देले भलो कले तापर प्रभुपाद कहले प्रभुपाद आउ किछ अछि कि they were so interested to serve आम केस रेले आमे we won't show any interest किन समान इंटरेस्ट कहउतले तापर धीरे धीरे जे से सुंदर भाव कले प्रभुपाद कहले से कहले प्रभुपाद आउ किछ अछि आमे आउरी करिया चाहछि तो प्रभुपाद तापर गोटे स्टैक फुलटे देले आनी तो प्रभुपाद कहले तब से हयग्रीव प्रभु कहउछन इट विल टेक होल ईयर टू कंप्लीट whole lifetime so Prabhupada was still in a solitary preacher free to stay or go writing his books in his own intimate relationship with Krishna quite independent of the boys in the storefront but now he had taken the International Society for Krishna Consciousness as his spiritual child. The inquiring young men, some of whom had already been chanting steadily for over a month, were like stumbling spiritual infants, and he felt responsible for guiding them. They were beginning to consider him their spiritual master, trusting him to lead them into spiritual life. धीरे धीरे प्रभुपाद को भरोसा करके प्रभुपाद को ऊपर माने श्रद्धा हो गला ट्रस्ट हो गला जे धीरे धीरे से माने प्रभुपाद कर इंस्ट्रक्शन फॉलो करिया लागिल आ प्रभुपाद को गुरु ऊपर ग्रहण कले although they were unable to immediately follow the multifarious rules that brahmanas and vaishnavas although they were unable to follow the multifarious rules of Brahmanas and Vaishnavas in India, किंतु ସେମାନେ follow କରିବାକୁ चेष्टा कले. According to Rupa Goswami, the most important principle that one should somehow or other become Krishna conscious. Concept येटा जेन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशये
somehow or other we have to engage ourselves in Krishna consciousness. कि गेम्स माध्यमरे हो, पढ़ा माध्यमरे हो, सेवा माध्यमरे हो, चैटिंग माध्यमरे हो, विभिन्न कृष्ण कॉन्शियसनेस पासिया पई जहाँ टेक्निक्स अच्छी तो जे कोनसे बाटरे हमें कृष्ण को सहित कनेक्ट हे करियो. That is the most important. Always remember Krishna and never forget Krishna. So it can be possible by any way we go. But once we become sincere, we have to, if we want to progress fast, then we have to follow the instruction of the spiritual master. So people should chant Hare Krishna and render devotional service. They should engage whatever they had in the service of Krishna. And Prabhupada was exercising this basic principle of Krishna consciousness to the furthest limit the history of Vaishnavism had ever seen. So Prabhupada evenly principle gudako sikhothile. Although he was engaging the boys in cooking and typing, Prabhupada was not doing any less himself. Rather, for every sincere soul who came forward to ask for service, 100 came who wanted not to serve but to challenge. तांको लगथियो जे सब कुछ तो सब सेट हैला प्रभात रे सब डिसेबल्स बॉडी चलिबा देखंतु प्रभात ऑल द प्रभात किछि बॉयज मन कुकिंग ट्रेन यूज करछंती किछि टाइपिंग ट्रेन यूज करछंती किन प्रभात निजे किछि कम कर नथिले आपण प्रभात का शेड्यूल देखिबे जेन भक्ति विनोद ठाकुर का शेड्यूल देखिबे आपण आश्चर्य हे जे भली किपरि जने करि पारि ठीक से भली प्रभात कर शेड्यूल प्रभात कहते जदियो मुझे 8-10 जन को अट्रैक्ट करूली इंस्पायर करूली कि 100 थिले पिला जे माने आसिले पळेले कारण से चैलेंजिंग प्रोग्रेस थे स्पीकिंग टू देम समटाइम्स शाउटिंग एंड पाउंडिंग हिज फीस तो बेले बेले कोन करंती प्रभात कहंती आउ बेले बेले वो स्ट्रांगली कहंती. Prabhupada defended Krishna against the Mayavad philosophy. This was also its service to Srila Bhaktisiddhanta Saraswati. He had not come to America to retire. So, with the passing of each new day, came yet another confirmation that his work and his followers and his challengers would only increase. So, speaking to ATP Kouchanti, the Prabhupada Sabule, Prabhupada Pranamatra no achi. निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशता तो निर्विशेष जो माने मायावाद ताको मानको प्रॉपर खंडन करछन ताको कांसेप्ट को खंडन करछन ताको हरिजन इम्पर्सनलिस्ट मानको मोनिस्ट मानको वाइडिस्ट मानको समस्त तो एटा जो लिखाला जे अमेरिका को से रिटायर करे वासना कारण प्रॉपर को बयस केते थिला 70 वर्ष 70 वर्ष बयस रे से रिटायर करिया पासनथि अमेरिका से केवल आस्थिले जे केमती ता गुरु महाराज कर इच्छा पूर्ण गुरु महाराज को इच्छा पूर्ण करिया को प्रभुपाद आज अमेरिका आछंती एते कष्ट से सो जदि वे सब करूचंती किंतु प्रतिदिन नुआ नुआ चैलेंज आछि नुआ नुआ ताकर disciples manakar samasya asuchi so Prabhupada is ready to face them all. How much he could do was up to Krishna. I am an old man, he said. I may go away at any moment, but if he were to go away now, certainly Krishna consciousness would also go away because the Krishna consciousness society was nothing but him. Prabhupada. His figure leading the chanting while his head moved back and forth in small motions of ecstasy. His figure walking in and out of the temple to the courtyard or into the apartment. His person sitting down smiling to discuss philosophy by the hour. He was the sole bearer and maintainer of the small, fragile, controlled atmosphere of Krishna consciousness on New York's Lower East Side.
तो ये भाव में प्रभुपाद ताकर प्रति एक्शन गुड़ा ताकर चलीवा को चैंटिंग को ताकर philosophy को discussion, everything was so wonderful. In the back room of his apartment, Prabhupada was usually alone, especially in the early morning hour, 2, 3, and 4 a.m. When almost no one else was awake. In these early hours, his room was silent. He walked alone in the intimacy of his relationship with Krishna. He would sit on the floor behind his suitcase desk, worshipping Krishna by typing the translations and purports of his Srimad Bhagavatam. Prabhupada कौन करते ना जो अर्ली मॉर्निंग रे समस्त मैंने जो साउंडलेस होता है कि डिस्टर्बेंस है तो सही समय रे प्रभुपाद ताकर भागवतम रो ट्रांसलेशन एवं व्याख्या दो. But this same back room was also used for meetings, and anyone who brought himself to knock on the Swami's door would enter and speak with him at any time, face to face. So see somewhere Prabhupada worldwide movement to start each just. So जब कि आस्थिले तो Prabhupada would straight away meet them. Prabhupada would sit back from his typewriter and give his time to talking, listening, answering questions, sometimes arguing or joking even. So Prabhupada evali sunutile katha houtile sethi basi. Visitor might sit alone with him for an hour before someone else would know. से बस्ती बनते कथा हबो तापरे जेतोल बंद आउट ए visitor no आसे. And Swamiji would invite the newcomer to join them. New guests would come and others would go. But Swamiji stayed, sat and talked. वहाँ लोग आसंते जानती प्रभुपाद किते बड़ी कथा कोई चलती. Generally, visits were formal. His guests would ask philosophical questions and he would answer, much the same as after a lecture in the storefront. So generally, जदि वो एक formal discussion होता है प्रभुपाद से तो किन समय ने बहुत questions पूछते हैं guest में. अब प्रभुपाद के भी पूछे ना question आंसर. अपन देखिए अन्य जगह रे questions सब questions रो होता है आंसर ना मिलता है. किंतु हमारा Gaudiya Vaishnavism, we have answer to every question somebody can ask. But occasionally, some of the boys who were becoming serious followers would monopolize time, especially on Tuesday, Thursday, and Saturday and Sunday nights, when there was no evening lecture in the temple. Often they would ask him personal questions. What was it like when he first came to New York? What about India? Did he have followers there? Were his family members devotees of Krishna? What was his spiritual master like? And then he would talk in a different way, quieter, more intimate and human. जदि वो वाला पर्सनल क्वेश्चन समाने वाला पचारती कारण प्रॉपर लिखिले ना बोर्ड रे देखिए अपना फोटोटा जदि देखाई थी वो we have meetings Monday, Wednesday and Fridays. तो बाकी दिन रे भक्तମାନେ बसिକି ସବୁ प्रभात को एभला विचित्र क्वेश्चन पचार. इन जदि क्वेश्चन उडा विचित्र था किंतु आंसर उडा बहुत सुंदर भारे प्रभात दिया. One night he told how he had met his spiritual master. केम से ता गुरु महाराज को देखले एटा कुछ about his childhood in India, how he had begun his own chemical business and how he had left home and in 1959 had taken sannyas. The boys were interested but so ignorant of the things the Swami was talking about that at the mention of a word like mridanga or sannyas, they would have to ask what it meant. भावनांती नुआ लोग कोटे जो जाननी इंडियन सब तो किसी मृदंग कौन बुझियो सन्यास को ले कौन बुझियो जिन्हें हमें उटे भक्त सहित एटी नुआ कथा होती से कहले प्रभु जी मोंटी के सोईबाटा कमी गला काली तो I'm feeling little sleepy. I told ठीक अछि तुम बताए गोटे दिन सोईबा कमी गला तो मैं ते मन खराब है किंतु Prabhupada would do it every day. He would just
take a nap of 2 hours, and then he would sit back and write or translate. So do some tapasya. Then you are asking me what is tapasya? से केवे तपस्या शब्द सुनी तो से बेला जे तपस्याटा गोटे जार्गन नहीं करे के जणा नहीं तो मृदंग सन्यास एगुडा भी ताको पे गोटे jargon थी and they would have to ask what it meant and he would go on conversational tangents describing Indian spices, Indian drums, even Indian women, and whatever he spoke about he would eventually sign upon it in the light of shastras. जहाँ भी कहबे से शास्त्र रो प्रमाण दे दोथि प्रभुपाद एटा हम देखिए प्रभुपाद को लेक्चर या कन्वर्सेशन Prabhupada would never speak anything else. He would just quote shastras. He did not ration out such talk, but gave it out abundantly by the hour, day after day, as long as there was a real life inquiry. So Prabhupada ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରତିଥର answer ଦେଇ ଚାଲନ୍ତି. At noon, ଏଇଟା last paragraph ପଢିଆ. The front room of Swamiji's apartment became a dining hall and in the evenings a place of intimate worship. Swamiji had kept the room with his 12-foot square hardwood parquet floor clean and bare. A solitary coffee table against the wall between the two courtyard windows was the only furniture. Daily at noon, a dozen men were now taking lunch here with him. The meal was cooked by Keith, who spent the whole morning in the kitchen. So you Keith Prabhupada को ଗୋଟେ disciple हबो तो से Keith Prabhupada को instruction रे पूरा दिन cooking रे time दिए पूरा morning ताकि noon रे प्रभु जी गोटे Prabhupada गोटे fish दे पारे ଆଉ Prabhupada निजे personally Keith को cooking रे training करछन्ती तो Keith बहुत भाग्यवान ଆଉ ସେ Keith କି ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ one of the most dearmost Prabhupada ଯେ ହେଲେ Kirtanananda Swami. Although he left ISKCON in his later part of life, but he had a major contribution in ISKCON or for Prabhupada. तो ये जो Keith Kirtanananda Swami तो तांको Prabhupada बेले बेले मजारे उन्हें कहती kitchen आनंद Prabhupada माने तांको jokingly डालते kitchen आनंद because he is so happy and blissful cooking for the devotees for Lord. तो ये बोले बाबरे Prabhupada तापरे केमती आगु को Keith केमती काम करिवो आ तापरे center केमती grow करिवो कारण chapter टा कोन planting the seed एबे केमती रोपण हे के एटा भक्तिर प्रचार से ऊपर डिस्कशन आरे आगु हम करिवा जेति थाउ श्रील प्रभुपाद की जय गो गोविंद की जय हरे कृष्ण नीलिमा माता जी वीरेंद्र प्रभु प्रफुल्ल प्रभु कृपा प्रभु उर्मिला माता जी राजनाथ प्रभु हरे कृष्ण जय जय कृष्ण प्रभु जी मो भी जॉइन कर दीजिए लास्ट हो आपण भी जॉइन कर लेने छे 15 मिनिट आसेल से क्लास पढाइसी ठीक अछि आपण ए दी पेज स्टडी पढ देबे लास्ट पढिथिले आ से वीडियोटा जे चाहिए देखि परिबे ठीक है आर्थर वीडियोटा देखले पठिथिले ओटे हां प्रभु जी देखले ना हां सेत्र केमती एटा देखिबा ये जीवन कहानी उस महान व्यक्ति ये लीजिए आपके लिखे के टाइप पन्ने जरा देखें
बहुत अच्छे। आपने बहुत अच्छा काम किया है, धन्यवाद। और कुछ टाइप करना हो तो बता दीजिएगा, आप जब चाहे मैं आ जाऊंगा। और कुछ? बहुत कुछ है यहाँ तो। ये लीजिए। इसमें तो सारा जन्म लग जाएगा। जी हाँ, कई जन्म लग जाएंगे। चलो यार, काम शुरू करते हैं, ज्यादा वक्त नहीं है हमारे पास। अगर हमें स्वामी जी को चौंकाना है तो उनके प्रवचन के लिए नीचे आने से पहले से खत्म करना होगा। पर वो जल्दी नीचे आ गए तो? नहीं यार, वो नहीं आएंगे, वो अपने अनुवाद के काम में बहुत व्यस्त हैं। अगर हम समय बर्बाद न करें तो शायद उनके आने से पहले से पूरा कर सकेंगे। चलो देखते हैं बैठा है कि नहीं। देखना, संभाल के रखना, आराम से, धीरे से रखना, धीरे से रखना, संभाल के, संभाल के। सीढ़ी भी संभाल के लगाना। हाँ चलो, बैठ गई। वाह, ये तो कमाल का हो गया यार। कितना अच्छा बन गया है। लगता नहीं है ये हमने बनाया है। ये तो वाकई बहुत अच्छा बन गया। हाँ, वाकई अच्छा बन गया। चलो अब पर्दे बदल देते हैं और दीवारों पर तस्वीरें लगा देते हैं। ये सब क्या हो रहा है? ये कमरा तो बहुत ही अलग लग रहा है। हमने अभी अभी इसे आपके लिए सजाया है। आप सब आगे बढ़ रहे हैं, यही तो कृष्ण जागरूकता है। आपको ये चित्र कैसे लगे? हमने भारत में ही लिए थे। बहुत अच्छे। ये है कौन? हनुमान। क्या ये बिल्ला है? नहीं, ये एक वानर है और श्री रामचंद्र के परम सेवक हैं। वाह, अति सुंदर। ये चित्र कहाँ मिला? हम ये कोलकाता से लाए थे। ये कौन है? महाप्रभु चैतन्य। ये चैतन्य महाप्रभु हैं, जिनकी आप चर्चा करते रहते हैं, पर इनकी 6 भुजाएं क्यों हैं? क्योंकि ये श्री रामचंद्र और श्री कृष्ण के अवतार के रूप में सामने है। देखिए, तीर और धनुष थामी हुई ये भुजाएं श्री रामचंद्र की भुजाएं हैं। बांसुरी वाली ये भुजाएं श्री कृष्ण की भुजाएं हैं। और ये दोनों भुजाएं? ये भुजाएं एक सन्यासी की है, श्री चैतन्य महाप्रभु की, श्री कृष्ण के भक्त। लगता है ये बंगाल से आपको ढूंढते हुए आ गया। ये कोई आश्चर्य की बात नहीं। भारत में सैकड़ों चित्रों में से आपने यही चुना। इसका अर्थ है कि आपको याद हो या ना हो, अपने पिछले जन्म में आप सभी भक्त थे। अब उनकी आज्ञा लेकर चैतन्य महाप्रभु आ गए हैं। ये बड़ा ही शुभ शगुन है। एबळे आगुक आहुरी अछि पर आपण देखिबे। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्त वृंद की जय, विनोद ठाकुर की जय। जय जय। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।